Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Nous voulons que cette année 2018 soit une année de bénédiction de l'Éternel. C'est le premier dimanche de l'année. Et nous nous retrouvons dans une petite salle. Mais notre Dieu n'est pas petit. Nous nous retrouvons dans un endroit inconfortable. Mais c'est dans cet inconfort que Dieu te montre qu'il est le plus fort. Parce que si tout va bien, tu ne pourras jamais savoir la bonté de l'Éternel. Il faut que tu puisses être malade, que tu puisses savoir que tu as un Dieu qui guérit. Il faut que tu puisses d'abord avoir faim, que tu puisses savoir que tu as un Dieu pourvoyeur. Aujourd'hui maintenant, comment veux-tu faire connaître que tu es un Dieu? Parce qu'il s'est révélé à Moïse en disant, va dire au peuple, aux enfants d'Israël, que je suis m'a envoyé. Amen. Il dit, je suis pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va croire. Et le Seigneur va devenir ce qu'il veut qu'il soit dans sa situation. Chacun d'entre nous en ce lieu, nous avons des situations. Amen. Mais nous avons un Dieu qui aime. Et il est capable de nous rencontrer individuellement au milieu de chacun de nos besoins. Si tu veux qu'il soit ta lumière, il sera ta lumière aujourd'hui. Parce que tout te sera fait selon ta foi. Il a posé la question à un aveugle. Que veux-tu que je fasse? Il a dit redonne-moi la vie. Crois-tu que je peux faire ça? Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. On va se lever ensemble. On va tenir la main de nos frères. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de bénir. Ensuite nous allons nous approcher. Je veux point oublier que ce soit une année de bénédiction. Est-ce qu'on peut se tenir les mains? Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons des besoins dans notre cœur. Et nous allons implorer la grâce du grand Dieu. Et notre Seigneur Jésus qui est mort à la croix. Nous allons lui demander de nous accorder en cette nouvelle année qui commence toutes les grâces dont nous avons besoin, toutes les faveurs dont nous avons besoin, qu'il nous accorde notre pain quotidien chaque jour. Mais par-dessus tout ce qu'on peut demander, qu'il sauve nos âmes et qu'il nous fasse marcher dans son royaume. Amen. Éternel Papa, éternel Jésus, nous venons t'implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Toi qui es au-dessus des cieux, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs des hommes, Seigneur. Toi qui nous vois présentement, Seigneur. Nous invoquons ton grand
pour arroser nos vies, pour arroser la vie de nos voisins, pour arroser la vie de nos frères et de ma soeur, pour arroser la vie, papa, de tout ce que tu me donneras à cœur de toucher et d'apporter ta parole. Seigneur Jésus, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie en cette année. Père éternel, nous venons tirer, papa, les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous venons briser, papa, les chaînes de la maladie. Nous venons briser, papa, les chaînes de la captivité. Nous venons briser, papa, les chaînes du doute. Nous venons briser, papa, les chaînes de la confusion. Nous venons commander en ton nom la guérison sur nos bien-aimés. Nous venons commander en ton nom le salut de nos âmes. Nous venons commander en ton nom le salut de nos frères et sœurs. Nous venons commander en ton nom le salut, Seigneur, de nos familles, le salut de ton pays. Montréal en ton nom, Québec en ton nom, Saint-Jérôme en ton nom, Saint-Lé en ton nom, Saint-Calix en ton nom, les Laurentides en ton nom. Nous prenons ta grâce, papa, que tes vives sont foules sur nous. Étends ta main sur nous, Jésus. Étends ta main sur nous, Jésus. Étends ta main sur nous, Jésus. Étends ta grande main sur nous, Jésus. Étends ta bonne main sur nous, Jésus. En cette année, viens nous délivrer, viens briser la maladie, viens nous bénir, Seigneur. Nous prions que chaque cœur te plaque au sang. Nous prions au Seigneur te plaque au sang. Nous prions au Seigneur te plaque au sang. Oh, la maïka, oh, la maïka. Nous avons besoin de plus de toi, plus de toi cette nouvelle année. Ouvre nos yeux avec nos savoir, Seigneur. Ouvre nos oreilles avec un vision de cœur. Oh, la maïka, donne-nous un cœur obéissant. On sait la Seigneur, que nous puissions obéir à ta voix, que nous puissions obéir à ta voix. Alléluia, Jésus, Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui est malade? बिमारी हुनुहुन्छ Qui a une douleur quelconque? कतै काहीँ दुखेको छ बिमार हुनुहुन्छ आमेन Nous voulons voir la gloire de Dieu en 2018. हामी 2018 मा परमेश्वरको महिमा देख्न चाहन्छौँ Amen. आमेन Nous voulons voir la gloire de Dieu en 2018. परमेश्वरको महिमा देख्न चाहन्छौँ Nous voulons commencer cette nouvelle année यो नयाँ वर्ष हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ avec une foi qui touche les montagnes, एउटा विश्वासले जसले त्यो पहाडलाई छुन्छ avec une foi qui déplace les montagnes. एउटा विश्वास जसले चाहिँ पहाडहरूलाई पनि हटाउँछ Amen. आमेन Parce que Dieu a fait de grandes choses. परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ Et il a dit, si tu me glorifies अनि उहाँ भन्नुहुन्छ avec la louange, तँ मेरो महिमा र प्रशंसा गर्छस् tu es en train d'élever mon nom. तँ मेरो नामलाई उचाल्दैछस् Et il ne peut pas ne pas demeurer. अनि उहाँ बास नगर्न सक्नुहुन्न Amen. आमेन Donc nous allons prier हामी प्रार्थना गर्नेछौँ pour ceux qui sont malades. जतिजना बिमार Est-ce हुनुहुन्छ que quelqu'un veut être délivré? कि कोही केही समस्या बिमारहरूबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ J'ai apporté l'huile d'onction. मैले तेल प्रार्थना गरेको तेल ल्याएको छु Amen. Ce n'est pas une huile spéciale, यो कुनै विशेष खालको तेल होइन mais c'est juste la parole de Dieu. र परमेश्वरको वचनले भनेको छ Allez-y vers les anciens. Ils vont se poindre de l'huile et vous allez être guéris. उनीहरूले तिमीलाई तेल लगाउने छन् र तिनीहरू निको हुनेछन् आमेन Si tu crois à la parole, यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ वचनमा laisse-moi te dire que tu vas être guéri. मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँ निको हुनुहुन्छ आमेन Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un veut une touche fraîche du Seigneur? यसै कारणले कोही बिमारी हुनुहुन्छ तपाईँ निको हुन चाहनुहुन्छ Amen. आमेन
Alléluia. Amen. Donc, Auntie, on va prier pour elle. हामी आन्टीको लागि प्रार्थना Nous avons गर्नेछौँ l'habitude de prier les uns pour les autres. हाम्रोमा बानी हुन्छ एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्ने Et nous voulons voir la gloire. र हामी परमेश्वरको महिमा देख्न चाहन्छौँ हालेलुया Alléluia. Auntie, tu peux t'approcher. आन्टी तपाईँ नजिक आउनुहोस् Nous allons tous prier. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आन्टीको लागि Auntie, tu veux qu'on... Qu'est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? हालेलुया तपाईँको लागि केको लागि हामी प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँ के को बिमार छ हालेलुया आन्टी तपाईँले के को बिमार छ Donc, nous allons prier pour Auntie pour qu'elle guérisse parce qu'elle dit que ses mains sont enflées. Elle a हात दुख्ने सुनिने भित्र दुख्ने हातको बिमार छ आन्टीको Je crois que लागि le Seigneur est capable de la को विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले यो हात दुख्ने निको पार्न guérir. सक्नुहुन्छ Nous allons venir imposer les mains sur elle. हामी सबैजना उठ्नेछौँ र हात आन्टीतिर लगाउनेछौँ यसरी Approchons-nous. हामी सबैजना नजिक आउनुहोस् नडराउनुहोस् अलिक नजिक आउनुहोस् न आन्टीको लागि Auntie, प्रार्थना moi je veux que गर्नुहोस्। tu ouvres un peu ses mains. म चाहन्छु कि तपाईँले Parce que je vais te demander. तपाईँले हातलाई पक्रिनुहोस्। हामी सबैजना प्रार्थना Seigneur Jésus, c'est par tes blessures et ta permission, Seigneur. Papa, que nous sommes guéris. Éternel Jésus, ce n'est pas la force ni pas la puissance, Seigneur. Mais nous venons commander la guérison de ta servante, Papa. Que lorsqu'elle aille à cet hôpital, Seigneur, qu'elle puisse, Papa, avoir, Papa, une guérison miraculeuse de ta main. Nous commandons maintenant la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, nous commandons la guérison, Papa, des mains des Auntie maintenant, Seigneur. Que lorsqu'elle aille à cet hôpital, Seigneur, que les résultats soient les résultats les plus positifs, Seigneur. Nous te prions de briser cette maladie, Seigneur. Papa, qui l'empêche, Seigneur Jésus, de vivre pour toi, Seigneur. Nous venons renverser toute maladie maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, c'est ta servante que nous la remettons entre tes mains. Que tu puisses la guérir, que tu puisses la toucher, que tu puisses la guérir encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te dis un grand amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait qu'on prie pour अरू कोही हुनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ हामीले Amen. आमेन Donc s'il n'y a personne, यदि कोही हुनुहुन्न भने gloire à Dieu. परमेश्वरकै महिमा हो हामी परमेश्वरको लागि ताली बजाएर धन्यवाद Vous savez, c'est par les choses folles que Dieu confond la sagesse. तपाईँलाई थाहा छ बुद्धिमानी कुराहरूलाई परमेश्वरले निर्बुद्धिमानी कुराहरू प्रयोग गरेर नै झुकाउनुहुन्छ J'impose les mains sur toi म तपाईँमा हात राख्छु et tu guéris. र तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ Tu vas aller dire à un médecin, तपाईँ गएर एउटा डक्टरलाई भन्नुहुन्छ il va te dire ça ne se fait pas. डक्टरले भन्छ यो त हुनै सक्दैन कसैले हात राखेर कताबाट चङ्गाइ पार्छ Parce que Dieu veut confondre sa sagesse. तर परमेश्वरले आफ्नो ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ Ah, tu dis moi je peux. उहाँले भन्नुहुन्छ म सक्छु Amen. आमेन C'est celui जसले विश्वास गर्छ qui va voir. त्यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा देख्नेछ Donc vous pouvez vous asseoir. तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ Merci d'être dans la présence du Seigneur. धन्यवाद परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुभएको लागि Merci de venir dans la maison du Seigneur. परमेश्वरको घरमा आउनुभएको लागि धन्यवाद आमेन Je suis content de vous revoir tous en 2018. म तपाईँहरूलाई सबैजनालाई 2018 मा देख्न पाउँदा धेरै खुसी छु Mais avant ça, on va accueillir notre invité aujourd'hui. त्यो अगाडि हामी हाम्रो पाहुनालाई निम्तो गर्नेछौँ आमेन Nous avons la sœur Claire, हाम्रोमा दिदी क्लेयर हुनुहुन्छ comme son prénom le dit. पहिलोचोटि आउनुभएको छ Nous sommes contents d'avoir la sœur Claire. हामी धेरै खुसी छौँ दिदी क्लेयरलाई यहाँ पाउन पाउँदा Quand elle m'a donné son prénom, जब उहाँले आफ्नो नाम मलाई भन्नुभयो elle m'a dit je m'appelle Claire. उहाँले भन्नुभयो मेरो नाम क्लेयर हो Claire, मैले भने क्लेयर comme le clair de lune. जसरी क्लेयर भनेको सफा कुरा हो जसरी
तारा Je dis que ça c'est une très bonne photo. यो चाहिँ धेरै राम्रो नाम हो Amen. आमेन Et je dis c'est le prénom de ma mère. मैले भने यो चाहिँ मेरो आमाको नाम हो Parce que ma mère s'appelle Claire. किनभने मेरो आमाको नाम पनि क्लेयर हो Amen. शुद्ध Donc nous sommes enchantés d'avoir Claire. हामी क्लेयर आन्टीलाई यहाँ पाउन पाउँदा धेरै खुसी छौँ Alléluia. हालेलुया Elle a été invitée par la sœur. अनि हाम्रो दिदी यहाँनिरबाट नृत्य गर्नु Nous sommes contents que tu sois là avec हामी खुसी छौँ कि उनीहरू हाम्रो बिचमा छन् C'est guidé aussi par. nous, par le C'est pas Seigneur. supposé d'être ici. Amen. La sœur Claire nous a raconté quelque chose aujourd'hui. आज दिदी क्लेयरले हाम्रो बिचमा केही भन्नुभयो Sœur Claire, est-ce que tu peux nous raconter C'est quoi? C'est l'histoire, comment ça s'est passé que Ok, Annick m'a demandé si vous voulez venir voir ici l'Assemblée. Je ne pouvais pas, j'allais visiter quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Et puis, vu qu'il faisait bien, j'étais supposée de partir le matin. Puis vu qu'il faisait trop froid, je dis, je vais partir plus tard dans l'après-midi. Mais j'ai dit, en attendant, je vais chauffer mon auto. Puis il fallait que j'aille gazer, des petites choses à faire dans le village. Puis j'ai dit, je partirai après. Puis quand je suis venue, je vais aller gazer, ben mon auto a fait le défaut. Fait que mon break était fini. Fait que je me suis en allée chez nous, j'ai dit, je ne bouge, je ne vais pas à l'hôpital. J'ai appelé Annick, parce que je suis supposée de ramener Annick à Saint-Alix. Puis je m'en appelé Annick, parce que je ne pourrais pas la ramener. Mais là, je ne pensais plus, moi, là. Fait que je n'étais pas partie. Elle dit non. Ah, ben, j'ai dit Corinne, elle dit d'abord, je peux y aller, tu sais. C'est ça. Je n'étais pas supposée d'être ici, mettons. Que le Seigneur guide nos pas. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कसरी उहाँ आज यहाँ आज पनि आउनु हुँदैन थियो अरे उहाँ हस्पिटलमा कसलाई भिजिट गर्न जानु आउनु भएको थियो अरे पहिला गाडीमा तेल लगाएर जानु पर्यो भनेर गाडीमा तेल लगाउन जानु अरे तर गाडी बिग्रेको जस्तो भयो पहिले उहाँ दिदीले निम्तो गर्नुभएको थियो अरे मण्डली जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो म जान पाउँदिनँ आज हस्पिटल जान सक्छु कसैलाई भेट्नको लागि तर उहाँले गाडीमा तेल हाल्न जाँदाखेरि गाडी बिग्रेको जस्तो भएर त्यही भएर कहीँ जान पाउनु भएन त्यही भएर मण्डली आउनु भएको अरे त्यसै कारण परमेश्वरले हाम्रो पाइलाहरू चाल्नुहुन्छ आमेन परमेश्वरलाई महिमा होस् Elle était supposée aller à l'hôpital उहाँका आज पनि हस्पिटल जानुपर्ने हो une de ses amies proches, une de ses sœurs. एउटा दिदीलाई भेट गर्नका लागि Et elle s'appelle Denise. अनि उहाँ त्यो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो डेनिज बिमारी आन्टी Et Denise est atteinte d'un cancer. अनि उहाँको डेनिज भन्ने आन्टीलाई क्यान्सर लागेको छ Moi je lui dis on va prier. अनि म भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ On va prier pour Denise. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Parce डेनिज que moi je crois que le Seigneur n'a pas occasionné cette situation pour nous. किनभने परमेश्वरले यो मौका दिनु भएन त्यसै बित्थामा Amen. आमेन। Nous allons prier maintenant pour Denise. हामी डेनिज आन्टी जो बिमारी हुनुहुन्छ उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ Alléluia. Qui croit que le Seigneur va guérir Denise de son को cancer विश्वास complètement? गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले डेनिज आन्टीलाई त्यो क्यान्सरबाट चङ्गाइ पार्नुहुन्छ Moi je crois que Dieu est capable de म le faire. विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले चङ्गाइ पार्नुहुन्छ Et il va le faire. अनि उहाँले गर्नुहुन्छ Amen. आमेन Qui croit que Denise, qui est à l'hôpital de Saint-Jérôme, को विश्वास गर्नुहुन्छ कि त्यो डेनिज आन्टी जो सेन्ट जर्मनको हस्पिटलमा हुनुहुन्छ va sortir de cet hôpital en santé. निस्किनुहुन्छ त्यो हस्पिटलबाट स्वास्थ्यमा Elle va donner son témoignage en ce moment. उहाँले यो ठाउँमा आएर गवाई भन्नुहुनेछ Nous allons prier pour किनभने हामीले उहाँको लागि प्रार्थना गर्यौँ आमेन elle. On va se lever encore une fois. हामी फेरि पनि उठ्नेछौँ Je sais que c'est beaucoup de मलाई gymnastique. थाहा छ कि उठ्दै बस्दै धेरै जिम्नास्टिक भयो Amen. आमेन Mais il faisait froid tantôt. तर अघि चिसो भइरहेको थियो On a failli geler. Amen. हामी झन्डै हिउँ जस्तो चिसो भएनौँ Mais le Seigneur nous a fait grâce. तर परमेश्वरले हामीमा अनुग्रह देखाउनु भयो Nous allons nous tenir. हामी उठ्नेछौँ र एकअर्काका हात पक्रिनेछौँ Rappelez-vous, सोच्नुहोस् là où 2 ou 3 जहाँ 2 कि 3 sont unis en son nom, भेला हुन्छन् उहाँको नाममा tout est possible. सबै कुरा सम्भव छ Un chasse 1000, एउटाले 1000 खेदाउँछन् 2 chasse 10 000. 2 जनाले 10,000 जना Le Seigneur a déjà guéri beaucoup de personnes. परमेश्वरले धेरैजना मान्छेलाई निको पार्नु भएको छ यही ठाउँमा Amen. आमेन Et il sera encore capable de guérir aujourd'hui. उहाँले फेरि पनि मान्छेहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ Donc, voilà comment nous allons prier. हामी यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नेछौँ Nous n'allons pas supplier le हामी Seigneur परमेश्वरलाई बिन्ती गर्ने छैनौँ en disant s'il te plaît Seigneur.
भन्ने छैनौँ कि कृपा गरेर निको पार्नुहोस् परमेश्वर Mais nous allons commander la तर guérison. परमेश्वरलाई माग्ने छौँ Nous allons envoyer une commande. हामी चाहिँ चङ्गाई होस् भन्ने छौँ Amen. आमेन C'est une façon différente de prier. चङ्गाई होइजा भन्ने छौँ C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on prie. हामी चाहिँ त्यो कुरा त्यसरी प्रार्थना गर्ने छौँ Il veut qu'on appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीले प्रार्थना गरेको जसरी नभएको कुरा त्यहाँ हुन्छ भने अनुसार Amen. आमेन Nous savons que Denise est malade, हामीलाई थाहा छ कि दनिज आन्टी बिमारी हुनुहुन्छ हस्पिटलमा mais nous qui sommes les enfants de Dieu, तर हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ en ce lieu यो même, ठाउँमा नै le Seigneur Jésus प्रभु येशू est capable d'envoyer son ange opérer Denise de ce cancer. आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाएर त्यो क्यान्सर बिमारबाट चङ्गाइ पार्न सक्नुहुन्छ Amen. आमेन Nous allons le renverser dans le nom de Jésus. हामी येशूको नाममा त्यो बिमारलाई हटाउनेछौँ Parce que rien ne peut tenir devant le Seigneur. किनभने परमेश्वरको अगाडि केही कुरा पनि उभिन सक्दैन Nous avons le témoignage de notre sœur Rachel qui était là. हाम्रो गवाई छ दिदी रासेल हुनुहुन्थ्यो Elle était malade. उहाँ बिमारी हुनुहुन्थ्यो Elle était à l'hôpital. उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो Mais nous avons prié pour elle. हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ उहाँको लागि Elle est sortie de उहाँ l'hôpital. हस्पिटलबाट निस्किनु भयो Elle est en santé. अनि आज उहाँ स्वास्थ्यमा हुनुहुन्छ Amen. आमेन Nous avons déjà des témoignages. हाम्रोमा यस्तो गवाईहरू धेरै छन् Même parmi nous. हाम्रै माझमा Il y a beaucoup qui étaient à l'hôpital. धेरैजना मान्छेहरू हस्पिटलमा थिए Beaucoup en sont sortis. धेरैजना निस्किए हस्पिटलबाट Amen. आमेन Donc, élevons Denise devant le यसै Seigneur कारण परमेश्वरमा जनी शान्तिलाई दिउँ et commandons la guérison. र परमेश्वरको चङ्गाइलाई बोलाउँ Commandons les anges de Dieu de descendre à स्वर्गदूतहरूलाई Saint-Jérôme हामी आज्ञा दिउँ कि गएर चङ्गाइ पारोस् भनेर et d'opérer le miracle. र अचम्मको काम गरौँ भनेर Amen. Prions tous ensemble. हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ Seigneur Jésus, Papa, nous venons devant प्रभु ton येशू trône de परमप्रभु grâce. हामी फेरि Nous पनि venons तपाईँको maintenant सामुन्ने commander la आउँछौँ। guérison हामी divine de दर्शन Denise शान्तिले maintenant, जो Papa. बिमारी Nous venons हुनुहुन्छ élever nos हस्पिटलमा, voix, Père जसकोमा éternel, क्यान्सर par ta भन्ने बिमार छ। supplication, Papa, प्रभु de येशू ta révérence de ce que tu as déjà fait. Denise, Papa, que ce cancer tombe dans le nom de Jésus. Papa, que son corps, de la plante de ses pieds jusqu'au dernier de ses cheveux, qu'il soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Seigneur, éternel Papa, c'est toi qui guéris, Papa. Envoie maintenant, Papa, tes anges, qu'ils campent autour de l'hôpital de Saint-Jérôme et qu'ils opèrent le miraculeux, Seigneur. Père éternel, c'est notre foi que nous élevons maintenant, Papa, pour que tu guérisses Denise, Papa, par ton sang et par tes meurtrissures et tes blessures. Papa, nous avons la guérison. Nous commandons que Denise soit guérie, Seigneur. Papa, agis maintenant, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur. Guéris Denise, Papa. Fortifie-la, Seigneur. Parle à son cœur, parle à son âme. Éternel, maintenant, envoie ta guérison, Papa. Qu'elle ressente, Papa, oh, la chaleur de ta main puissante, Seigneur. Que cette opération divine soit faite de ta main. Papa, que les visites avec les docteurs, Seigneur. Que les résultats de médecins soient enregistrés. La gloire de ton nom. À toi est la gloire, à toi est l'honneur, à toi est l'élévation, à toi est la louange. Jésus, Papa, nous te disons pardon. Nous commandons, Papa, la guérison. Nous commandons, Papa, la guérison. Nous renversons le cancer dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois que le Seigneur est là, est-ce que tu peux battre le nom de la puissance dans le nom de Jésus. येशूको नाममा शक्ति छ Alléluia. Donc nous allons prendre le dîme et nos offrandes. हामी भेटीहरू उठाउँदैछौँ Et nous sommes courts en temps. हामी कम्ती समयमा छौँ समयमा Il y aura une petite parole du Seigneur pour vous rapidement. तपाईँहरूलाई म छिटो गरी छोटो परमेश्वरको वचन भन्ने छु Et ensuite on va rentrer. र हामी घर जानेछौँ Le Dieu généreux demande la nouvelle année. यो नयाँ वर्षमा परमेश्वरलाई खुसीसँगले दिनुहोस्
salle n'est pas mal. यो कोठा त्यति नराम्रो पनि रहेन आमेन C'est une belle petite salle. सानो राम्रो कोठा रहेछ Comparé à la grande salle en bas. Là où il fait froid. तलको त्यो ठुलो कोठा हेर्ने यो अलिक राम्रो रहेछ सानो तातो Amen. आमेन On va peut-être prier pour nous. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il fait chanter gloire. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il fait chanter gloire. Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Amen. Dieu va faire encore des miracles. परमेश्वरले फेरि पनि मिराकल Il va nous गर्नुहुन्छ guérir non seulement nous, mais Denise et tous ceux qui veulent être guéris. परमेश्वरले हामीलाई मात्र होइन दैनिकलाई मात्र होइन तर जतिजना चाहन्छन् सबैलाई निको पार्नुहुन्छ आमेन Donc on va faire les annonces rapidement. हामी छिटो गरी सूचना भन्नेछौँ Donc première chose que j'aimerais vous partager, पहिलो कुरा म तपाईँलाई केही बाँड्न चाहन्छु ce sont comme les chartes d'étude de la lecture de la Bible pour toute l'année. यो चाहिँ वर्षभरिको लागि बाइबल पढ्ने तरिका हो Qui veut lire la Bible toute l'année? को चाहिँ बाइबल पढ्न चाहनुहुन्छ वर्षभरि नै Donc ici nous avons la chronologie यहाँनिर चाहिँ यो पेपरमा लेखेको छन् कुन कुन पद पढ्नु de la Bible, comment elle était écrite vraiment page par page, verset par verset. कसरी बाइबल लेखिएको छ त्यो कुरा यहाँनिर लेखिएको छ Amen. Ça vous aide de faire un suivi pour vous-même. यसले तपाईँलाई मद्दत गर्छ बाइबल कसरी पढ्नु Amen. Comme aujourd'hui nous sommes au 7. जसरी तपाईँलाई थाहा छ आज हामी 7 मा छौँ Donc tu vas aller au jour 7. तपाईँ यहाँ 7 दिनमा जानुहोस् Tu vas lire qu'est-ce qu'il y aura pour le jour 7. र यहाँ जे 7औं दिनमा पढ्नु भनेको छ त्यही पढ्नुहोस् Nous avons 6 jours de retard, अनि हामी 6 दिनको ढिलो भइसक्यौँ mais vous pouvez vous rattraper. Amen. तर तपाईँ सजिलो पक्रिन Donc qui सक्नुहुन्छ veut? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ बाइबल पढ्न यसले तपाईँलाई मद्दत गर्छ Donc आमेन 3 personnes, donc tu vas mettre 3 là-bas. Tu vas nous partager à ceux qui veulent. Ça c'est pour les adultes, mais nous avons aussi pour les enfants. आमेन यो चाहिँ Jean Thérèse, tu en as? Non, je n'en ai pas. यो चाहिँ ठुलो मान्छेको लागि हो सानो केटाकेटीहरूको लागि Ça पनि c'est छ pour la lecture de la Bible. Tu lis la Bible? La Bible. Tu vas donner à maman. Qui d'autre n'a pas? कोही कसैकोमा छैन Ne le prenez pas pour décorer la maison. Amen. आमेन यो घर सजाउनको लागि Mathieu veut te donner pour les enfants. Ça c'est pour les enfants. सानो नानीहरूको लागि पनि छ Donc, pour les enfants. सानो नानीहरूको लागि Qui d'autre? Tu as pris? Ça c'est pour toi, tu as un grand. Donne à tes frères. Non, lui il est trop petit. Ok. Donc c'est bon? Gloire à Dieu tout le monde. परमेश्वरको महिमा होस् Gloire à Dieu tout le monde. परमेश्वरको महिमा होस् Alléluia.
Donc, les annonces de ce mois, यो महिनाको सूचना nous allons commencer avec qu'est-ce qu'on va faire pour le mois de janvier. यो जनवरी महिनामा हामी के गर्ने भन्ने कुराबाट सुरु गर्नेछौँ Amen. आमेन Nous savons tous que le mois de janvier, c'est le mois du jeûne et de prière. Amen. हामीलाई थाहा छ होला कि यो जनवरी महिना भनेको प्रार्थना र उपवासको महिना हो C'est un temps que nous offrons à notre Dieu. हाम्रो यो समय परमेश्वरलाई दिने समय हो Je prends toujours la théorie du hamster. जहिले पनि म ह्यामस्टर भन्नेको उदाहरण लिन्छु Il est tout le temps dans sa grille en train de courir. एउटा सानो मुसा आफ्नो जालमा जहिले पनि कुदिरहन्छ Il ne s'arrête qu'à la mort. Il est mort. जब ऊ मरुन्जेलसम्म त्यो मुसा कुदिरहन्छ Mais nous qui avons notre Dieu, तर हाम्रोमा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ nous voulons nous arrêter un moment, हामी एउटा समय रोकिन चाहन्छौँ prendre le temps de prier, प्रार्थना गर्ने समय लिनेछौँ prendre le temps de passer du temps avec le Seigneur Jésus dans sa परमेश्वरसँग présence, उहाँको उपस्थितिमा समय लिनेछौँ chercher sa face. उहाँको मुहारलाई खोज्नेछौँ Amen. आमेन Parce que souvent nous avons beaucoup d'activités. किनभने धेरैचोटि हाम्रोमा धेरै कुराहरू Et हुन्छ ces activités nous poussent toujours à devenir des religieux. अनि कुनै कुराहरूले हामीलाई धार्मिक मात्रै बनाउँछ Nous धर्म n'avons pas de relation avec Dieu. अनि धर्ममा मात्रै हुन्छौँ तर परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन Amen. आमेन Donc le mois de janvier, यसै कारण यो जनवरी महिना nous le consacrons au Seigneur. हामी परमेश्वरलाई दिनेछौँ C'est comme si nous offrons ce temps-là au Seigneur यो चाहिँ जस्तै यो समय जनवरी महिनाको समय लिनेछौँ pour prier, प्रार्थना adorer, गर्न individuellement se ressourcer dans le Seigneur, उपवास बस्न र परमेश्वरमा बढ्नका लागि lire la Bible, बाइबल पढ्न prendre un bon départ एउटा राम्रो सुरुवात गर्न pour avoir une direction personnelle dans sa vie. एउटा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउन Amen. आमेन Parce qu'on ne veut pas juste vivre comme ça. किनभने हामी यतिकै जिउन चाहँदैनौँ On veut que le Seigneur nous guide. तर परमेश्वर हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई चलाएको Il dit dans sa parole, उहाँले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ rapprochez-vous de moi म मेरो नजिक आऊ et je me rapprocherai de र vous. म तिमीहरूको नजिक आउनेछु आमेन Comment nous nous rapprochons du Seigneur? कसरी हामी परमेश्वरको नजिक जाने C'est en allant sur la montagne यो चाहिँ त्यो पहाडतिर गएर हो avec lui. उहाँसँग Moïse est allé sur la montagne मोसा त्यो पहाडमा गए et il a pris du temps avec le र Seigneur. उसले परमेश्वरसँग समय लिए Et quand il est descendu de cette montagne, अनि जब त्यो पहाडबाट ओर्लिएर आए il est sorti avec les tables de la loi. ऊ चाहिँ ठुलो आज्ञाको कानुनको एउटा टेबल ल्याए Et ce sont ces tables-là अनि qui ont permis de diriger त्यो le peuple. ढुङ्गामा कानुन लिएर आए र त्यो जातिलाई चलाउन सके Parce que la Bible dit un peuple sans direction, c'est un peuple qui périt. किनभने बाइबलले भन्छ एउटा जाति जसकोमा कुनै बाटो छैन एउटा गोठालो छैन त्यो जाति गएर मर्छन् मात्रै Amen. आमेन On veut aller sur la montagne, यसै कारण हामी त्यो पहाडमा जान चाहन्छौँ seul, एक्लै individuellement. व्यक्तिगत रूपमा एक एकजना On ne veut pas aller avec notre frère. हामी आफ्नो दाजुसँग जान चाहँदैनौँ On va aller sur notre propre तर terre, एक्लै आफ्नै बलमा à la rencontre du Seigneur Jésus. प्रभु येशूलाई भेट्नका लागि Donc, nous avons un temps de prière. Ça, donc, il y a 7 jours. यसै कारण 7 दिनको प्रार्थना À partir de ce soir, आज बेलुकादेखि on appelle ça le temps de jeûne. हामी भन्छौँ उपवासको समय Amen. आमेन Donc, pourquoi on jeûne? किन हामी उपवास बस्छौँ Combien de personnes savent pourquoi on jeûne? कतिजनालाई थाहा छ हामी किन उपवास बस्छौँ Donc, le jeûne, उपवास c'est pour se rapprocher du Seigneur. भनेको चाहिँ परमेश्वरको नजिक जानका लागि हो Parce que l'homme est fait de chair. मान्छे भनेको शरीरमा हुन्छ Et quand nous nourrissons cette chair, अनि जब हामी यो शरीरलाई खाना खुवाउँछौँ nous vivons selon la chair. हाम्रो शरीर प्रकारले जिउँछौँ Mais quand nous jeûnons, तर जब हामी उपवास बस्छौँ nous rabaissons la chair. हाम्रो शरीरलाई होच्याउँछौँ Et nous laissons l'Esprit de Dieu र परमेश्वरको आत्मालाई उचाल्छौँ prendre la place. हामीमा ठाउँ लिनुहोस् भनेर Amen. आमेन Et nous voulons être dirigés par l'Esprit du Seigneur. हामी परमेश्वरको आत्माबाट चल्न चाहन्छौँ Nous ne voulons pas être dirigés par notre propre chair. हाम्रो शरीरबाट चल्न चाहँदैनौँ David dit, दाउदले भन्छन् j'humilie mon âme म आफै होचिन्छु par le jeûne. उपवास बसेर Amen. आमेन Le jeûne que le Seigneur demande, जुन परमेश्वरले उपवास बस्नु भन्नुभएको छ c'est que tu détaches ces chaînes-là. त्यो चाहिँ
त्यो चेनहरू तोड्नका लागि हो que tu as eu en 2017 et dans les années précédentes. अनि यो 2017 र आउने वर्षहरूमा Amen. आमेन Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture comme on le pense, उपवास बस्नु भनेको खानेकुरा मात्रै नखानु मात्र होइन mais c'est d'abandonner toutes ces pensées que tu as, तर त्यो सोचाइहरू जति पनि छन् त्यो सोचाइलाई हटाउनु हो d'abandonner toutes ces mauvaises attitudes नराम्रो व्यवहारहरूलाई हटाउनु हो qui étaient difficiles pour toi. जुन चाहिँ तपाईँको लागि गाह्रो थियो हटाउनलाई आमेन Mais le fait que tu ne manges pas, तर तपाईँ जब उपवास बस्दा खाना खानुहुन्न ton esprit est plus disposé à manger la parole de Dieu. तपाईँको आत्मा अझै तयार हुन्छ परमेश्वरको वचन खानलाई Parce que la parole de Dieu dit, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ l'homme ne vivra pas de pain seulement, मान्छे रोटीले मात्रै बाँच्दैन mais तर de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. त्यो वचनहरूद्वारा जुन परमेश्वरको मुखबाट निस्किन्छ Amen. आमेन Donc pour commencer ton année, यसै कारण आफ्नो वर्ष सुरु गर्नलाई tu veux bien faire la balance. तपाईँ राम्ररी ढकपल्ला मिलाउनुहोस् Nous avons trop mangé à Noël. हामी यो क्रिसमसमा धेरै खायौँ Amen. आमेन C'est le temps de, on peut dire, sans graisse. अब चाहिँ लुते हुने समय हो Et dès janvier, यो जनवरी महिना c'est le temps de dégraisser. लुते हुने महिना हो आमेन। कम्ती खाएर आमेन Trop de nourriture, धेरै खानु ce n'est pas bon. राम्रो होइन Prenons le temps maintenant de diminuer. अब अलिकति खानेकुरा हटाउने उपवास बस्ने समय हो Qui va jeûner? को उपवास बस्नुहुन्छ Moi, je jeûne. म चाहिँ उपवास बस्नेछु Le jeûne, comme je vous l'ai dit, जसरी मैले भने उपवास ce n'est pas se priver seulement de nourriture. खानेकुरा मात्रै नखानु होइन उपवास बस्नु भनेको आमेन Tu peux te priver de nourriture et faire le mal pareil. तपाईँ खानेकुरा नखान सक्नुहुन्छ गएर नराम्रो काम गर्नुभयो भने के नै काम भएर Le jeûne qui est agréable à Dieu, तर उपवास परमेश्वरलाई मनपर्ने खालको c'est que tu puisses humilier भन्नु खोजेको तपाईँ आफ्नो आत्मालाई होच्याउनु हो en lisant la parole de Dieu. परमेश्वरको वचन पढेर Tu vas rencontrer certains enfants तपाईँ आफ्नो जीवनमा भेटेर qui ne sont pas en règle avec Dieu. जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन त्यो कुरा हेरेर Tu vas prendre le temps de demander à Dieu de sonder ton cœur et tes reins. र परमेश्वरलाई तपाईँ भित्र हेर्नुहोस् भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ Et d'enlever ces pierres. अनि त्यो नराम्रो ढुङ्गाहरूलाई हटाउन भन्न सक्नुहुन्छ Amen. आमेन Parce que le cœur de l'homme est tortueux. किनभनेको méchant मान्छेको हृदय सबैभन्दा नराम्रो र खराब छ par-dessus tout. सबै कुराभन्दा माथि Nul ne peut le connaître. कसैले पनि त्यो हृदयले जान्न सक्दैन Et c'est seul l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs des cœurs. तर परमेश्वरको आत्माले मात्रै जसले हाम्रो सबै कुरा हेर्नुहुन्छ Amen. आमेन Donc quand tu vas devant le Seigneur, यसै कारण जब तपाईँ परमेश्वर नजिक जानुहुन्छ en te privant de tout ce qui conduit ta chair त्यो कुराहरू नगरेर जुन तपाईँको शरीरलाई अगाडि डोर्याउँथ्यो dans les activités de tous les jours, दिन प्रतिदिन गर्ने कामहरूमा prends le temps, यो समय लिनुहोस् ce mois de janvier, जनवरी महिना prends le temps de rencontrer le Seigneur. परमेश्वरलाई भेट्ने समय लिनुहोस् C'est comme de l'eau यो चाहिँ पानी जस्तो हो qui est secouée. जुन चाहिँ हल्लाएको छ Si elle est tout le temps secouée, यदि एउटा पानी जहिले हल्लिरह्यो tu भने ne vas pas voir la différence entre l'eau claire et la saleté. जहिले एउटा पानी हल्लाइराख्यो भने सफा पानी कहाँनिर बस्छ र फोहोर पानी कहाँ बस्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन Prends le temps de déposer la bouteille. तर यदि तपाईँ बोतलमा हल्लाइकन राख्नुहुन्छ भने Et les résidus त्यो हल्लिन छोड्छ vont descendre dans le fond. र मैला पानी तल जान्छ Et tu auras de l'eau propre en haut. र माथि चाहिँ सफा पानी आउँछ Amen. आमेन C'est ça le jeûne qu'on veut faire. यही चाहिँ हो उपवास हामी बस्न चाहेको De lire la parole de Dieu. हामी परमेश्वरको वचन पढ्न चाहन्छौँ Ne gênez pas sans la parole de Dieu. परमेश्वरको वचन नपढी किन उपवास नबस्नुहोस् आमेन Donc, le jeûne, c'est se priver de nourriture aussi. यसै कारण उपवास बस्नु भनेको खानेकुरा नखानु पनि हो Parce que quand tu rabaisses ta chair, किनभने जब तपाईँ आफ्नो शरीरलाई होच्याउनुहुन्छ la seule chose qui te reste, एउटै कुरा रहन्छ c'est l'esprit. तपाईँको आत्मा हो Et l'esprit est allumé. अनि तपाईँको आत्मा बल्दछ L'esprit est éveillé. बिउजिन्दछ Tes sens sont multipliés. तपाईँको सबै कुराहरू दुई गुणा बढी बढ्छ Quand tu lis la parole de Dieu, जब तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ tu la vois sous un autre angle. तपाईँ अर्कै भिन्दै प्रकारले देख्नुहुन्छ राम्ररी बुझ्न थाल्नुहुन्छ Ça te permet de vraiment savoir qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de toi.
अनि यसले तपाईलाई देखाउँछ तपाईभित्र कस्तो के कुरा छ भनेर Et le Seigneur dit, अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ je déverserai de mon esprit sur toute chair. म मेरो आत्मा सबै शरीरमाथि खनाउने छु J'enlèverai la pierre. म तिमीहरूबाट ढुङ्गा हटाउने छु Je leur donnerai un cœur de chair. र एउटा मासुको हृदय लगाइदिने छु Et je mettrai mes lois dans leur cœur. र म मेरो कानुनहरू त्यसको हृदयमा Et हाल्ने je छु ferai en sorte qu'ils gardent mes commandements. अनि म गर्नेछु कि यसले मेरो आज्ञाहरू पालन गरिराखोस् भनेर Amen. आमेन Nous devons nous exposer à l'Esprit de Dieu. हामी परमेश्वरको आत्मामा देखा पर्नुपर्छ Qu'il fasse l'opération. कि उहाँले हामीभित्र अपरेसन गर्न सक्नु भएको होस् काम गर्न सक्नु भएको होस् हामीभित्र Amen. आमेन C'est important. यो महत्त्वपूर्ण हो Donc, qui va jeûner? को उपवास बस्नुहुन्छ Dis à ton ventre. आफ्नो पेटलाई भन्नुहोस् Ventre, पेट il va jeûner. उपवास बस्नुपर्छ Amen. आमेन Parce que plus de prière, जति प्रार्थना गर्नुहुन्छ plus de puissance. त्यति नै बढी शक्ति तपाईलाई Pas de मिल्छ prière, प्रार्थना कहिले गर्नुहुन्न pas de puissance. शक्ति हुँदैन Mais le तर jeûne उपवास mélangé avec la parole de Dieu. उपवास तपाईँ परमेश्वरको वचनसँग मिक्स गर्नुहुन्छ Je vous dis, c'est une bombe atomique. म तपाईँलाई भन्छु यो चाहिँ एउटा बोम जस्तो हुन्छ ठुलो पड्किने C'est une poutine. यो चाहिँ पुचिन हो Alléluia. Gloire au nom de Jésus. आमेन। Donc, nous avons 7 jours de jeûne. यसै कारण 7 दिन उपवास बस्नुपर्ने Pour ceux qui travaillent, जतिजना काम गर्नुहुन्छ des fois c'est difficile. कोही बेला गाह्रो पर्छ Tu peux faire un jeûne pour commencer. तपाईँ सुरु गर्नका लागि उपवासबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ Soit en début de journée, तपाईँ दिनको सुरुमा je peux te dire de 6h à 6h. तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ 6 बजेदेखि 6 बजीसम्म बस्छु Je ne mange pas. म खान्न Je mange à la fin de la journée. म दिनको अन्तिममा खान्छु Amen. आमेन Mais tu peux faire un jeûne complet aussi. तपाईँ एउटा पुरा उपवास पनि बस्न सक्नुहुन्छ जतिजना बानी लागेको Pour छ ceux qui n'ont pas beaucoup d'activités, जतिजनाको धेरै काम गर्ने कुरा हुँदैन vous pouvez faire un jeûne, ne pas manger toute une journée. तपाईँ एक दिन केही नखाइकन बस्न सक्नुहुन्छ Vous allez penser que vous allez mourir. तपाईलाई लाग्छ कि तपाईँ मर्न आँटेको जस्तो Mais sachez que vous n'allez pas mourir. मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईँ मर्नुहुन्न एक C'est दिन votre नखाँदा chair qui va réclamer quelque chose. तपाईँको शरीरले माग्छ केही कुरा Il faut être capable de dire non. तर तपाईँले भन्नुपर्छ होस् Parce que si vous dites non à vous-même, यदि तपाईँले आफैलाई होस् भन्नुहुन्छ भने vous allez dire non au péché. तपाईँले पापलाई पनि होस् भन्नुहुन्छ Parce que le péché vient de l'extérieur. किनभने पाप भनेको बाहिरबाट आउने कुरा हो Si tu tiens ta propre chair en laisse, यदि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई बाँधेर राख्नुहुन्छ il va t'obéir. यो शरीरले तपाईँलाई टेर्छ Amen. आमेन Donc c'est ça le jeûne. त्यही हो उपवास Vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, 4 यसै jours. कारण 2 दिन 3 दिन 4 दिन Mais faites quelque chose. तर केही चाहिँ गर्नुहोस् Amen. आमेन Offre un sacrifice aussi. एउटा परमेश्वरलाई बलि चढाउनुहोस् Qu'il voit l'état de ton cœur. कि उहाँले तपाईँको हृदय कस्तो छ त्यो हेर्नु भएको होस् Le Seigneur ne regarde pas la quantité, परमेश्वरले कति गर्छ त्यो हेर्नुहुन्न mais il regarde à la qualité. तर हेर्नुहुन्छ कस्तो प्रकारले गर्छ Est-ce que tu as été sincère? के तपाईँ नम्र भएर गर्नुभएको हो Amen. आमेन Il y a une personne qui va jeûner juste une seule journée. कसले एक दिन मात्रै उपवास Tu बस्छन् peux jeûner 1 heure, तपाईँ 1 घन्टा पनि बस्न सक्नुहुन्छ mais c'est 1 heure sincère. तर एउटा 1 घन्टा हो नम्र प्रकारले En बसेको disant, Seigneur, भनेर कि परमेश्वर je suis faible, म दुर्बल छु je n'arrive pas. म उपवास बस्न सक्दिनँ लामो मलाई मद्दत गर्नुहोस् Laisse-moi dire, il va t'aider. मलाई भन्न दिनुहोस् उहाँले भन्नुहुन्छ Tu vas voir que 1 heure va devenir 2 heures. तपाईँ देख्नुहुन्छ तपाईँको 1 घन्टा बदलेर 2 घन्टा Et हुन्छ tu vas commencer à avoir plaisir. र तपाईँ त्यसमा खुसी हुन थाल्नुहुन्छ Parce que la force vient de l'éternel. किनभने बल भनेको परमेश्वरदेखि आउँछ Si tu fais un jeûne par toi-même, यदि तपाईँ आफ्नै बलले उपवास बस्नुहुन्छ quelqu'un t'énerve tout de suite. कसैले तपाईँलाई रिस C'est उठाउँछ la nourriture. तपाईँलाई खानेकुरा Moi, हेरिहाल्नुहुन्छ c'est comme ça quand je jeûnais sans demander à Dieu. यदि म परमेश्वरलाई नसोधिकन उपवास बसेँ Quand भने je suis énervé, कसैले मलाई रिस उठाउँछन् je regarde à gauche, à droite. म देब्रे दाहिनेतिर हेर्छु Qu'est-ce que je peux manger? के चाहिँ खाउँ Il m'a énervé. यसले मलाई यति रिस उठायो Je m'énerve contre la nourriture. मेरो रिस म फ्याल्छु Là, je me fais un खानेकुरामाथि gros plat. अनि म यति ठुलो खानेकुरा पकाउँछु Je mange. अनि खान थाल्छु Et là, je suis apaisé. अनि म अगाउँछु Après, Dieu me dit, tu as vu? अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तैँले देखिस् Vraiment. साँच्चीकै Est-ce que tu avais besoin de faire ça? के तैँले यसो गर्नु नै पर्ने Amen. आमेन Bon, chacun sa faiblesse. आफ्नो दुर्बलता हुन्छ Moi, j'aime la nourriture.
मलाई चाहिँ खानेकुरा धेरै मनपर्छ C'est ça. त्यही हो Donc jeudi, यसै कारण बिहिबार c'est notre jour d'étude biblique बाइबल स्टडी हुन्छ de chaque semaine. हरेक हप्तामा Et vu que c'est un temps de jeûne et de prière, तर यो हप्ता प्रार्थना र उपवासको कारण nous allons avoir une étude biblique spéciale sur la prière. हामी प्रार्थनामा बाइबल स्टडी बस्नेछौँ Sur comment prier. कसरी प्रार्थना गर्नु Amen. आमेन Est-ce que quelqu'un veut savoir comment prier? के कोही जान्न चाहनुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्नु Comment rencontrer le Seigneur dans sa कसरी vie? परमेश्वरलाई उहाँको उपस्थितिमा भेट्नु Parce qu'il dit ce n'est pas la multiplication des paroles. किनभने हाम्रो राम्रो बोली वचन प्रार्थनामा